Is my screen visible now? Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we will continue further. In my last lecture, I have talked about the four different types of shift register, you can say, because you have seen in the lab one of the experiment in which I have told you how the bits are shifted towards the right. So we can have right shift, we can also have left shift. When you want to have a right shift, you have to give your input to the first flip flop, and if you want your bit should be shifted towards the left, then you should give your serial input from the right flip flop. That means if I'm talking about, yes, if I'm talking about the different flip flops, so if there are 4 bits, so this is flip flop 0, this is flip flop 1, this is flip flop 2, and this is flip flop 3. If I want the data should be shifted towards the right, then the data input, so the serial data will be given here. So serial data input, and you will see the data is shifted 1 bit at a time. The data will be shifted 1 bit at a time. The data will be shifted 1 bit at a time. This is called as a right shift. If you want to acquire left shift, then the data input serial will be given from the right hand side through flip flop 3, and you will be taking output serially from this side. Okay, so it depends upon in what way you want to shift the data, in what way you have to shift the data. Remember, in the practical we have seen the timing diagram. In the timing diagram we have also seen how the bit 1 is shifting towards the right for every clock pulse. For every clock pulse you have seen the data is shifting towards the right. Okay, it is shifting towards the right. Similarly, if you want to have a left shift, the only change is that you will be giving the data from the rightmost flip flop, and then the data will be shifting in this manner. Okay, so that is the shifting of the bit left and right. Now we have one more shift register which is called as a bidirectional shift register. So you can just write down the heading as a bidirectional shift register. Now in the bidirectional shift register, as the name suggests, we can have the shifting of the data. We can achieve the shifting of the data on the right hand side as well as on the left hand side. So we have this one important shift register which is called as bidirectional, bidirectional shift register. Bidirectional shift register. Bidirectional shift register. Now in this bidirectional shift register, we can achieve the shifting of the data towards the right hand side. That is, the data will be shifting from left hand side towards the right hand side, or else we can achieve the data shifting from right to left. That is why it is called as a bidirectional. So in bidirectional shift register, I will just give you an overview. You will be able to see in any of the books, or if you can Google search, you will be able to see this. We have mostly 4 types of we have 4 D flip flops. Okay, I will not give the detail of each and every pin. So I'm just writing down D0, D1, D2 and D3. And you know that for every we have a clock pulse, we are giving the clock pulse. So this is connected towards the clock. Okay, then we can also have a clear, or it is called as a reset. हमने preset
और reset का देखा है. So you can say preset or clear, but here I'll be only showing you CLR, that is CLR, clear. See that it is, we have a bubble, so it is active low, because initially I want all the flip-flops should give me 0 as an output. Initially it should give me 0. Okay, then with some circuitry we can achieve. For example, we have AND gate, then we have OR gate, again we have AND gate. I am just giving you the brief understanding. You can search in any of the book, you will be able to see this particular diagram. This is bidirectional shift register. This is bidirectional shift register. Okay, and the output of OR gate is given. The output of OR gate is given as the D, as the input. Here also it is given as the output, as the input to the flip flop. Here it is given as the input. Here it is given as the input. So this is your D0 as the input D0. This is D1. This is D2. This is D3. This is D3. Okay, and the output of this is given as the input to OR gate. So this is AND 1 gate, AND 2 gate, then AND 3, AND 4. This is 5. This is 6. This is 7. This is 8. So every output of AND is given to the respective OR gates. It is given to the respective OR gates. Then we have this connection. Okay, so there are some connections are there. Important thing is I'm not giving you in the detail. Again, I'm repeating this. I'm not giving in the detail, but you can able to see in any of the book. I'm just giving the important, the points. This is called as mode select. This is called as mode select. And mode select, and we have NOT gate. We have NOT gate. Okay, so this is the arrangement. This one input, let me give the name as shift right serial input. This is shift right serial input. Shift right serial input. And at this and at the AND gate number 8, we have shift left. Shift left serial input. Serial input. Okay, serial input. So this is just a very brief, block diagram. You can say circuit to show you the explanation of bidirectional shift register. Bidirectional, it means in the same shift register we can achieve right shift as well as left shift, one at a time. So this is arrangement. Detail मैंने diagram नहीं बनाया है, okay, because it is a complex diagram. Okay, the important thing which I have to show is here. Here the first thing. Now here your M is called as a mode select. मैं चाहता हूँ कि मेरा ये शिफ्ट रजिस्टर राइट शिफ्ट काम करे. मैं चाहता हूँ कि मेरा ये शिफ्ट रजिस्टर राइट शिफ्ट में काम करे. Okay, then in that case your M should be 1. So when M is equals to 1, here it will be 0, and accordingly the circuit will work as right shift register. Then you will ask me where we have to give the input. The input will be given at this point. That is why the name is given as shift right serial input. Shift right serial input. जो भी आपको डेटा देना है 4-bit डेटा, वो आपको यहाँ पे देना है. But provided you will have M is equals to 1, because M is equals to 1 will make this particular circuit to work as a right shift register. Then if this M is equals to 0, then this circuit will work as a left shift register. In that case, I won't be using shift right serial data. मेरा data जो मुझे actually देना है वो मैं यहाँ पे दूंगा. Shift left serial input. Shift left serial input. Okay, so whatever 4-bit I am giving, that I will be giving from shift left serial input data. Okay, so this is the connection.
Initially I want my all the flip flop should give me the output as 0. Okay, the output as 0. तो यहाँ पे जो आपका Q0 है, यहाँ पे आपका Q1 है, इसका भी कनेक्शन ये सर्किट में कहीं ना कहीं लगा है. Okay, so here you have Q0, here you have Q1, here you will have Q2, here you will have Q3. So these connections are also connected somewhere. So I have not drawn the detailed circuitry. Okay, so क्योंकि now at this point is not possible for me to draw the complex diagram. So I have just shown you that what is the important point. M is the important point because it is called as a mode select. M is equals to 1, we'll shift the data left. M is equals to 0, we'll shift the data, sorry, M is equals to 0, we will shift the data left, and M is equals to 1, we'll shift the data right. अगर data को right को shift करना है, the data input will be given at shift right serial input at this point, at the which will be as one of the input to AND gate 1. And if you want to shift the data towards the left, then the data input will be given at one of the input of AND gate 8. Okay, then the data will be shifted towards the left. So this is the bidirectional shift register. This is the important shift register. I hope you have understood. Any question related with this? Any question? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So with this, we will move to the next shift register, which is also the important shift register, which is called as universal shift register. Universal shift register. Universal shift register. This is also important shift register. वहां पे बायडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर हमने पढ़ा. तो बायडायरेक्शनल इज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड. बायडायरेक्शनल से हमको पता चला कि हम लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर हम राइट को भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट वन एट अ टाइम. ओके, यानी मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ तो वही टाइम पे मैं राइट शिफ्ट भी नहीं कर पाऊंगा कि मुझे एक ही करना पड़ेगा, लेफ्ट शिफ्ट करो या फिर राइट शिफ्ट करो. So that is why it is called as a bidirectional. Now this is called as a universal. Universal means what? Here it means universal means we can achieve all the form of the shifting. That means we can achieve SISO, we can achieve SIPO, we can achieve PISO, we can achieve PIPO. So all these can be achieved in the same shift register. That is why it is called as a universal shift register. That is why it is called as a universal shift register. Okay. Now here I am not going to draw the diagram because diagram is complex. The diagram is complex, but it is somewhere similar with this. It is somewhere similar with this. You will be able to see 4 flip-flops. Okay, 4 flip-flops. But these 4 flip-flops are not D flip-flop, but they are SR flip-flop. Okay, they are SR flip-flop. I want everyone to open your eye properly and see the the diagram in front of you, as well as open your ears and listen to my explanation. What I have said, that universal shift register is something similar with this. The changes are, number one change, that we will be using 4 flip-flops, but these 4 flip-flops are SR flip-flop. These are SR flip-flop. Okay. The second one is, there also you are using some 8 AND gates and 4 OR gates, and with some little bit of modifications. Okay. Then there also we have a mode select, that is M. There also we have serial input data. Okay. We also have a clock. Everything is the same. Okay, but circuitry is complex. The circuitry is complex. So the important thing is there, we can achieve all these different configuration in the universal shift register. So हमको वही circuitry with little bit of modification can be implemented in either of this particular configuration, or in either of this particular scenario. Okay, so universal shift register, I am not going to draw the diagram, but you can just
refer any of the book, you will be able to see this particular universal shift register. Okay. Now I think I have that particular PPT. Let me show you the PPT. So this is already we have studied shift register, so I'm not going to go into detail this. हमने ये सब पढ़ा है. Serial input, serial output. This thing also we have studied. Serial. मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है? Yes, sir. हाँ, तो ये सब हमने पढ़ा है, तो ये मैं सब अभी कुछ नहीं लेने वाला हूँ. ठीक. Serial input, serial output, parallel in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, parallel out. So let me check whether we can be able to see universal shift register as well as bidirectional shift register. Yes. See here, the connections are something like this. Okay, but this is a specific, IC which will perform 4-bit parallel in serial out shift register. This is a IC. Okay, so IC के अंदर क्या है, ये सब चीजें. This is a IC. We have the pinch clock, shift load. This is the data in, serial out. Okay, so 4-bit parallel in, serial out. तो हम parallel input जो दे रहे हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं और serial output हम यहाँ पे देख रहे हैं. Okay, and we have shift and load. Okay, so if I want to load the data, then you have to give 1 as the input, and then the data हम जो देंगे D0, D1, D2, D3, जो यहाँ पे भी दिख रहा है, so that can be loaded into this, and you will be able to see the serial output for every clock pulse. So this is the particular IC which will perform 4-bit parallel in, serial out shift register. Okay, so this is also one important thing I have to show you. Then here the explanation is given. Okay, so I will be sharing this. The explanation is given in this. Then yes, this thing also we have seen. Then this is parallel in, parallel out. This thing also I have taken yesterday. Parallel inputs are given here by using the D flip-flop. All the clocks are combined together to a single clock, and inputs are given at the respective D0, D1, D2, D3. And similarly, at the same time, the parallel that outputs are taken here. I have told you, in a single clock, everything we achieve. हम input भी दे रहे हैं, वही clock में हम output भी ले रहे हैं. Okay, so this thing, everything I have taken in the last lecture. Those who are absent, please go through my last lecture recording. So this is the IC 74HC195. This is a shift register, and it's timing diagram. Okay, so timing diagram is not so important, but we will be seeing the other way. 4-bit, yes, this is the bidirectional shift register, 4-bit. Yes, see here. This is a 4-bit bidirectional. Can you see the AND gate and one OR gate? The D flip-flop. Okay, so connections are in this manner. The mode I was talking about, M is equals to 1, M is equals to 0. यहाँ पे उन्होंने मोड नहीं दिया, इन्होंने क्या दिया, right/left, लेफ्ट बार है. इसका मतलब अगर ये पॉइंट पे ये, let me make this also very clear, right/left बार, right/left बार, इसका मतलब क्या है, अगर मुझे राइट शिफ्ट को डेटा करना है तो R इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 देना पड़ेगा. ये पॉइंट पे आपको 1 देना है, और वही अगर आपको डेटा लेफ्ट शिफ्ट करना है तो ये पॉइंट पे 0 देना है. ये कैसे समझ में आएगा? बिकॉज यू सी देयर इज नो राइट बार, दैट मीन्स राइट इज एक्टिव हाई. इफ यू वांट टू हैव राइट शिफ्ट, R is equals to 1. If you want to have a left shift, then it is left bar. Left bar means active low, then there should be 0. Okay, so here it is given. Now here important thing, this is a particular connection where you have serial data given at this point. If you see carefully, there is no serial data left shift. इसका मतलब this is a typical circuitry in which आपको डेटा यहाँ पे ही देना है.
इवन दो इफ यू रिक्वायर राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, आपको डेटा यहाँ पे ही देना है. दैट इज अ मीन, दैट इज अ मीन. ओके, तो मैंने जो अभी यहाँ पे आपको लिया था, यस हियर, अभी मैंने हाँ ये वाला जो लिया था, यहाँ पे शिफ्ट राइट सीरियल इनपुट अलग हम इनपुट दे रहे हैं और शिफ्ट लेफ्ट सीरियल इनपुट हम अलग दे रहे हैं. ओके, तो राइट शिफ्ट के लिए डेटा यहाँ पे जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट के लिए डेटा यहाँ पे जाएगा. बट ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, हियर वी डू नॉट हैव प्रोविजन टू गिव टू डिफरेंट डेटा एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. एक ही पॉइंट में हम डेटा देना है, डिपेंडिंग अपॉन आपका आर इज इक्वल टू 1 है या लेफ्ट बार इज इक्वल टू 0 है, वो हिसाब से आपका डेटा लेफ्ट या राइट को शिफ्ट होगा. दैट इज ओके. सो यू कैन रेफर एनी ऑफ द सर्किट. It is, see, this is not so difficult to understand, provided you should know important function and the operation of the flip flop. Otherwise, अगर आपको ऑपरेशन नहीं पता, आपको एंड गेट कैसे काम करता है और गेट कैसे काम करता है ये नहीं पता, then you won't be able to understand. Okay, so you take any of the circuit from the book or from the Google. Once you understand the operation of the D flip flop or all the any of the flip flop which is there into the consideration, then you won't find it difficult. Okay, so this is about this particular 4-bit bidirectional shift register. This is a logic diagram. We will move further. Yes, the working is given here. Here left and right shift, left and right shift. So you can just go through this. Yes, now yes, universal shift register block diagram is not given, so you have to refer any of the book, or you can just Google search. You will see this particular universal shift register. Now we will proceed further. Now we have to understand two more important application of shift register. We have to understand two important applications of shift register. So these two applications are, which are the applications here? Which are the applications? Yes, the two important applications are ring counter. सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, wait. There is some issue, I think. Yes, open board दिख रहा है सबको? Yes, sir. So we are going to see the application of shift register. The first important application is a ring counter. So please write down RING, ring counter. Ring counter. So you will be able to understand what do you mean by ring counter, why it is called as a ring, and why it is called as a counter. Okay. So counter, important thing about the counter is that counter is used to count the pulses, to count the number of clock pulses. The counter is used to count the number of
clock pulses. That is why it is called as a counter. हम काउंट कर सकते हैं क्लॉक पल्स हमने कितने दिए 1 2 3 4 5 6. So that is why it is called as a counter. Then why it is called as a ring counter ring? Then the explanation for this I will give you once I will explain you the ring counter. One I will explain you the ring counter. So हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि application of shift register. Now when you talk about the application of shift register, this ring counter is also called as a synchronous shift register counter. This is also called as synchronous shift register counter. Now you understood why it is called as if the name suggests synchronous, then it means all the flip flop are सभी फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक है वो हम कंबाइन करते हैं और एक ही क्लॉक को देते हैं. That is why it is called as synchronous. Okay, so ring counter is also called as a synchronous shift register counter. Now in this counter, the output of the last flip flop is connected to the first flip flop. This is very important. The output of first flip flop. So let me give you the structure of the ring counter very briefly. The structure is, see what I am drawing now. You have one flip flop. The output of that flip flop is QA. ठीक है, आपको अगर QA नहीं पसंद, we will do one thing. So you have, yes, you have 4 flip flops, 1 2 3 4. So output of first flip flop is Q0. The output of second flip flop is Q1. The output of third flip flop is Q2. And output of fourth flip flop is Q3. So मैंने अभी क्या बनाया? मैंने बनाया 4 flip flop और मैंने सिर्फ I am interested in the output. I am interested in the output. Okay, so Q0, Q1, Q2, Q3. Initially output of Q0 is 1, output of Q1 is 0, output of Q2 is 0, and output of Q3 is also 0. This is the initial condition. This is the initial condition of a ring counter. So if anyone asks you in the Viva or in the exam, then you have to show that initial condition of the ring counter is that your first flip flop will have output as 1, second, third, and fourth flip flop will have output as 0. Okay. Then the next important thing is that output of the last flip flop is connected with the input of the first flip flop. Then it becomes the ring counter. Again, I'm repeating. A ring counter is constructed by using serial in, serial out shift register and feedback. Can you see here? Serial input is given from the first flip flop with the initial condition as 1 0 0 0, and the output of the last flip flop is connected to the first flip flop. अगर हम ऐसा करते हैं, then this circuitry is called as a ring counter. This is very important. Okay, if I have to show you by using the D flip flop, then it is the same now. D flip flop 1 2 3 and 4. So we have this D flip flop. Then QA is connected as the input. So I will take this as a Q0. Then it is connected to this is D0. Then this is a D1. Then Q1 is connected as the input to D2. Then output of Q2 is connected as input of D3, and output of Q3 is connected and given as an input to the first flip flop. Everything remains the same. Clock, and clock. Okay, if you want to show, you can also show preset and clear, preset and clear, preset and clear, preset and clear.
Now here preset and clear will be used CLR. यहाँ पे भी PR, CLR, PR, CLR, PR and CLR. So this PR and CLR is used to set the initial conditions. Now what is the initial condition? Initial condition is that Q0 should give me 1, Q1 should give me 0, Q2 should give me 0, and Q3 should give me 0. This is the initial condition. Initial condition होने के बाद then we apply the clock pulses and we will see the ring pattern. Then we will see the ring pattern. Okay, so this ring pattern I can show you by using the state table. I want everyone to pay attention. See the state table. I am using the preset क्यों चाहिए? To set the initial condition. So I have a preset. Then I am using clock. Then I want to see what is Q0, what is Q1, what is Q2, and what is Q3. Initial condition I want QA1, QB0, Q01, Q1 0, Q2 0, Q3 0. So for that preset अगर मैं 0 रखता हूँ और अगर मैं clock देता हूँ नहीं देता हूँ, then I have this as 1, others will be 0. And in rest of the cases I have to take preset as 1. Preset मैं 1 करूँगा because you know preset is a active low. मुझे Q0 को 1 करना है, बाकी इसको 0 करना है. तो preset 0 दो, वो फ्लिप फ्लॉप को अगर मैं 0 देता हूँ तो वो फ्लिप फ्लॉप 1 देगा मुझे, और बाकी के अगर इसको मैं क्लियर 0 देता हूँ तो बाकी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट 0 है. ओके, तो इसको अगर प्रीसेट 0 दूंगा तो ये 1 रहेगा, और ये बाकी तीनों को अगर मैं क्लियर 0 दूंगा तो बाकी के तीनों भी फ्लिप फ्लॉप आउटपुट 0 देंगे. दैट इज द मीनिंग. ओके, सो प्रीसेट ही मैंने यहाँ पे लिया है, क्लियर मैंने यहाँ पे नहीं लिया है. सो so that we should not have a confusion. तो प्रीसेट मैंने 0 दिया, क्लॉक कुछ भी रहने दो, क्लॉक रहे ना रहे, this will be 1, other will be, because I have to achieve this as the initial condition. Now under the normal operation preset will be 1. Now here after preset will be 1 because I have to do normal operation. Under the normal operation you require clock. Okay, लेकिन मैं क्या करता हूँ, प्रीसेट को मैं 1 करता हूँ और इनिशियली मैं क्लॉक को 0 देता हूँ. तो मैं क्लॉक अगर मैं क्लॉक देता नहीं हूँ, इसका मतलब वो प्रीवियस स्टेट को स्टोर करके रखता है. तो प्रीवियस स्टेट मेरा 1 0 0 0. ओके, ये मेरा पहला स्टेट को प्रिजर्व करके रखा. अब मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मल ऑपरेशन चाहता हूँ तो प्रीसेट में 1 ही रखता हूँ. अभी मैं क्लॉक देता हूँ, जब मैं क्लॉक देता हूँ 1, you know this is a D flip flop. And remember output of the last flip flop is given as the input to the first flip flop. Okay, then because of this condition what is going to happen, your QA, can anyone of you tell me what would be the output of Q0 now when the clock is given? Can anyone of you tell me what would be the output of Q0? What will be the output of Q0 from here? What will be the output of Q0? मेरी आवाज आ रही सबको? 0. हाँ, it is 0 because Q3 मेरा इनिशियल 0 है ना, और वही तो मैं इनपुट दे रहा हूँ पहले फ्लिप फ्लॉप को D0 को. तो D0 को जो दूंगा वही तो आउटपुट में आएगा. तो जब 0 दूंगा, जो पहले 1 था वो 1 अभी इसके इनपुट में जाएगा और Q0 आउटपुट आएगा 0. Okay, so here I can write here Q0 is equals to 0. Can I say now 1 will be shifted here, 0 will be shifted here, and this 0 will be shifted here, and this 0 has come here. Do you agree with this, everyone? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी प्रीसेट नॉर्मल कंडीशन के लिए प्रीसेट फिर से 1 है, फिर से आपने क्लॉक दिया, फिर से क्या होगा, 0 अब इधर आएगा, 0 विल बी शिफ्टेड हियर. ये आपका ये जो 0 है वो इधर आएगा.
So 0 will be here. Here will be 0. This 1 will be shifted here. This 0 will be shifted here. Can you see the shift? Again I am repeating. Second last time. Then again you will have 0. You will have 0. Here you have 0. Here you have 1. And the last time. Now this one will be shifted here. This here will be 0. Here will be 0. Here will be 0. Can I say this 1 0 0 is the condition which was the previous one? Which was the previous one? Can anyone of you tell me after how many clock pulses we have achieved the initial condition? After how many clock pulses? 5. 5 या फिर फोर्थ, ऐसा बोलो, फोर्थ क्लॉक पल्स में हमको इनिशियल कंडीशन मिला. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ क्लॉक पल्स में हमको इनिशियल कंडीशन मिला. ये कंटिन्यू होते रहेगा, एंड इफ यू सी प्रॉपरली, instead of seeing this properly, I will show you with the timing diagram. All of you pay attention. मैंने जो क्लॉक पल्स अभी दिया था ना, क्लॉक पल्स वाज पॉजिटिव एज ट्रिगर. मुझे आपको मैं दिखाता हूँ. ये देखो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा किया था, ये क्लॉक पल्स. इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव एज ट्रिगर है, यानी पॉजिटिव एज रहेगा तभी वो ट्रिगर होगा, तभी फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर होगा. ओके, सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग लेट मी शो यू द टाइमिंग डायग्राम. टाइमिंग डायग्राम में ये ज्यादा क्लियर होगा. टाइमिंग डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको. दिस इज फॉर द क्लॉक. ये देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. क्लॉक आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर है, तो मुझे आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा. पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. अभी मुझे क्या बनाना है? मुझे अभी बनाना है क्या? मुझे अभी बनाना है Q0, Q1, Q2 और Q3. ये बनाना. ये प्रॉपर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये पहले डॉटेड लाइन बना लेता हूँ. ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन. ओके, नाउ पे योर अटेंशन. मैं इसके लिए भी डॉटेड लाइन बनाता हूँ. यस, नाउ पे अटेंशन. आपका इनिशियल Q1 क्या है, सॉरी Q0 क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट वाज द इनिशियल Q0? इनिशियल Q0 1. ओके, तो आपका इनिशियल Q0 1 है. तो ये जो यहाँ पे हमने जो किया था विद द क्लॉक पल्स. ओके, सपोज यस योर Q0 is 1. okay, so for positive clock pulse initial condition, तो मैं initial condition बोलता हूँ. suppose clock pulse ये वाला है आपका 1 0 0 है. तो see here what I am drawing. Q0 is initially for the positive edge. I am drawing it as a 1, and this will remain 1 till the next clock pulse. Okay, this is 1, this is 1. Okay, Q0 is equals to 1. This is for your first clock, second clock, third clock, fourth clock, and fifth clock. Okay, now this will be remain 1. This will remain 1. Okay, now with this as the 1, with this as a 1. Okay, now in that particular clock, what is the status of the remaining? What is the status of the remaining? Other bits 0. are, yes, very good. Other bits are 0. Other bits are 0. Other bits are 0. ये भी 0. Okay. This is also 0, and this is also 0. Okay. इसको मुझे ऊपर लेके जाना है. So Q1 0, Q2 0, Q3 0. Now you have second clock positive age. Second clock positive age.
सेकंड क्लॉक पॉजिटिव एज में क्या हो रहा है? सेकंड क्लॉक पॉजिटिव एज में आपका ये 0 आ रहा है या फिर आप करो क्लॉक आया, वो क्लॉक में आपका 0 है। ओके, तो सेकंड इसमें आपका 0 है, तो सेकंड क्लॉक में आपका ये 0 आ गया, सो दिस इज 0। बट सेकंड क्लॉक में व्हाट इज द स्टेटस, what is the status of the Q1? Can you see here? It is 1, and Q2 0, and Q3 0. So this thing I can show you in this. So Q1 is 1, so here I have to go 1, so here it is 1. What about Q2? 0. What about Q3? That is also 0. Now what happens at clock pulse 3? Clock pulse 3, Q0 0, Q1 0, Q2 1 and Q3 0. Okay, so Q2 1 है, तो Q2 1 दिखाना है। How will you show? Q2 1 आप कैसे दिखाओगे? ये तीसरे वाले, तीसरा क्लॉक पल्स, ये देखो तीसरा क्लॉक पल्स आया, मैंने बताया था पॉजिटिव एज क्लॉक में ही आपका आउटपुट आएगा, तो दिस इज अ पॉजिटिव। बाकी केसेस में क्या है? ये भी 0, ये भी सॉरी आपका Q1 क्या है? Q1 भी आपका 0 चाहिए ना, तो आप क्या करोगे? हियर यू विल सेकंड इसमें थर्ड क्लॉक में वो 0 जाएगा, वो 0 गया और 0 रहेगा। व्हाट अबाउट Q3? Q3 आपका 0 है, Q3 आपका 0। ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट नाउ? एट द नेक्स्ट क्लॉक पल्स Q0 0, Q1 0, Q2 0 and Q3 is 1. तो Q3 1 है, बाकी सब 0 है, बाकी Q3 1 है, बाकी सब 0 है। तो Q4 में आपका Q4 जो है, ये देखो Q4 में ये 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, बाकी सब 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 0 होगा ऐसा जाके, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये इंस्टेंट में क्या क्या है? यू विल एबल टू सी Q0, Q1 0, Q2 0 एंड Q1 1। ये इंस्टेंट में क्या है? ये इंस्टेंट में Q0 0, Q1 0, Q2 is 1, Q3 is 0। ये इंस्टेंट में क्या है? ये इंस्टेंट में क्या है? ये इंस्टेंट में है Q0 0, Q1 1, Q2 0, Q3 0। ये इंस्टेंट में क्या है? ये इंस्टेंट में Q0 1, Q1 0, Q2 0, Q3 0। So if you see properly, your 1 is shifted, your 1 is shifted. At the fifth clock pulse, this 1 will appear here, this 1 will appear here, where? ये देखो यहाँ पे, ये देखो 1, ये 1 जाएगा यहाँ पे, and this will continue, and this will continue। Okay, that is why this is called as a ring counter। Why it is called as a ring counter? The single 1 in the shift register circulates around the shift register, forming a ring, रिंग क्यों कहा जाता है? ये जो 1 है, ये शिफ्ट रजिस्टर में सर्कुलेट होते रहता है, ये ऐसा चलते रहेगा, ये चलते रहेगा। दिस विल कंटिन्यू whenever you give the clock pulses। जब क्लॉक पल्सेस दिया जाएगा, तब तक ये सब चलते रहेंगे, and that's why it forms a ring, and it is called as a ring counter। It is called as a ring counter। Any question in this? Any question in this? No, sir. Okay, fine। So the state diagram is important. It's the ring counter using D flip-flop block diagram is important. So you should know each and everything of the ring counter. Okay, this is one of the application of shift register। The next application is Johnson counter, JOHNSON, Johnson counter। तो काउंटर आपको पता है, इट विल काउंट 1। अभी हम यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं ना, 1 बार 2 बार 3 बार आपका शिफ्ट हो रहा है, सो दिस इज नथिंग बट वी आर काउंटिंग कि वो 1 कितने बार शिफ्ट हुआ है। ओके, एक शिफ्ट 1 क्लॉक,
पे, second shift, second clock पे. So actually we are counting. So that is why it is called as a counter. Now here it is called as a Johnson counter. Now this Johnson counter is also called as a mod 2 raised to n, mod 2 raised to n, mod 2 raised to n Johnson counter. अभी ये mod क्या है? This thing we will study. What do you mean by 2 raised to mod? What do you mean by mod? So this thing we are going to study. Okay. Now whenever you talk about this ring counter and Johnson counter, हमेशा लोगों को ये होता है, okay, confusion होता है, okay. So this has to be very much clear. This has to be very much clear. We say simple as a Johnson counter. You can say simple as a mod 2 raised to n bit counter, mod 2 raised to n bit Johnson counter, या फिर आप simple बोल सकते हो 2 raised to n bit Johnson counter. So there are different ways in which you can give the name. Now here n is important. Here n is important. N means number of flip-flops. The number of flip-flops which we are using to design the Johnson counter. The number of flip-flops which we use to design the Johnson counter. Okay, that is the meaning. Now here the important, इसका जो मैंने यहाँ पे जो बताया था ना रिंग काउंटर, मैंने जो आपको रिंग काउंटर बताया था, द सिंपल डायग्राम, ऐसे ही सिंपल डायग्राम हमारा जॉनसन काउंटर में भी है. तो वो डायग्राम क्या है? लेट मी शो यू. ये जो हमने बनाया था ना रिंग काउंटर में सिंपल डायग्राम, यहाँ पे मैं बनाता हूँ जॉनसन काउंटर. वो देखो क्या है. यू हैव Q0, you have Q1, you have Q2, you have Q3, you have Q3. Okay, now see here properly. Initial condition वही रहेगा 1 0 0 0. Initial condition वही रहेगा, but with slight modification. See the modification. The modification is here you will take output from Q3 bar. This is important. बच्चों को ये समझ में नहीं आता. Output is taken from Q3 bar and it is given as the input to the first flip-flop, and it is given to the first flip-flop. Okay, and what about the rest of the thing? Everything remains the same. Everything remains the same. The only change is that the output of last flip-flop, but its complement is given as the input to the first flip-flop. Okay, and here it is also the synchronous shift register, because every clock are tied together and only one clock is given at a time. Okay, and it is also serial out shift register. It is also serial output register as the ring counter. Okay, the only change is that we have the output, inverted output Q bar of last flip-flop is given as the feedback to the input of the first flip-flop. Okay, so that is the only change we have. That is the only change we have. अब ये करने से क्या होता है? ये करने से क्या होता है? सिर्फ अगर मैं इतना छोटा सा मॉडिफिकेशन करूंगा तो चेंजेस क्या होंगे? See here what would be the changes. That changes I will show you by using the state table. You can cross check or you can draw the timing diagram for this. Okay, see the state table. State table में मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा. मैं लिखूंगा clock, मैं लिखूंगा Q0, मैं लिखूंगा Q1, मैं लिखूंगा Q2 और मैं लिखूंगा Q3. ओके, मैं लिखूंगा Q3. इनिशियली मैं कुछ भी क्लॉक नहीं दे रहा हूँ. इनिशियली मैं कुछ भी क्लॉक नहीं दे रहा हूँ. अगर मैं कुछ भी क्लॉक नहीं दे रहा हूँ और अगर मैंने सभी फ्लिप फ्लॉप को क्लियर किया है by using preset and clear button, then you assume that every output will be giving me 0. Now I want the initial condition as 1 0 0 0. So मैंने क्लॉक दे दिया. So when you give the clock, you remember Q3 bar will be 1, and that one will be given to the input of the first flip flop. Now can anyone of you tell me at clock 1 what is Q0? At clock 1 what is Q0?
at clock 1 what is Q0. मेरी आवाज आ रही सबको? Am I audible? Yes, sir. हाँ, तो मुझे बताओ क्लॉक देने के बाद Q0 आउटपुट क्या आएगा? मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे बताया ना मैंने, Q3 का आउटपुट है I want inverted one, so it is Q3 bar. That is given as the input to the first flip flop. Now with this, can you tell me what will be the, जब मैं क्लॉक दूंगा तब Q0 का आउटपुट क्या है? 1. 1. Yes, क्योंकि Q3 यहाँ पे 0 है, Q3 बार 1 होगा, 1 इनपुट जाएगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के, तो आउटपुट में आएगा 1, so 1 will be there. Similarly, tell me what is the output of Q1? 0. 0. Very good. Output of Q2? 0. Output 0. of Q2? 0. अभी मुझे बता सकते हैं फटाफट? आगे फिर से मैंने क्लॉक दिया, फिर से मैंने 0. 0. हाँ 1. 1, हाँ 1 आएगा ना, ये देखो ना, Q3 0 है, Q बार का आउटपुट ले रहा हूं मैं, दिस इज जॉनसन काउंटर, यही गलतियां होती है. 1 1 0 आई एम 0. नॉट, हाँ 1, फिर ये 1 इधर, ये 0 इधर, ये 0 इधर. सेकंड में 1 1, ये 1 इधर, ये 1 इधर, ये 0 इधर, फिर से 1 1 1 1, हाँ ये इधर, ये इधर, ये इधर, सो 1 1 1 1. बाद में बता सकते क्या होगा नेक्स्ट क्लॉक में? 0. वेरी गुड. 0 1 1 1. नेक्स्ट में 0 0 1 1, and this will continue, and this will continue. With this, can you draw the timing diagram? With this, can you draw the timing diagram? जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, this one. Are you able to draw the timing diagram? Yes, sir. Yes. So this you are implementing only with the one change, that output, the complemented output will be taken and given as the input to the first flip flop. So that is called as a Johnson counter. That is called as a Johnson counter. Okay, that is called as a Johnson counter. अब यहाँ पे मैंने, if you see properly, कोई मुझे बता सकता है after how many clock pulses I will achieve the initial condition as 0 0 0 0? कोई बता सकता है? 8. Yes, 8. Okay, 8. अभी देखो, this is state number 1, this is the other state, 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 this is the other state. This will go on. After 8 clock pulse, you will see this same state. So can I say there are total 8 stages? Yes or no? Can I say that there are total 8 stages? Yes or no? मुझे बताओ total how many clock pulses? Total how many clock pulses? Total 8 clock pulses. Total 8 clock pulses. Okay, total 8 clock pulses. So this is called as a mod 8 counter. This is called as a mod 8 counter. Why it is called as 8? Because there are total 8 clock pulses, or there are total 8 stages. Total 8 different stages. Total 8 different stages. Okay, that is why it is also called as mod 8 counter. This is also called as mod 8 counter. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Hi or na? Yes, sir. Okay. Now something we have studied, the two application as a ring counter and the Johnson counter. Okay. Now we will see. उसके पहले let me show you. I think I have that particular this one.
Okay, we will see that one afterwards. Yes, see here now. Now we have seen the Johnson counter and the ring counter. Now we will study something more about the counter now. We have studied the two applications of the shift register, Johnson counter and ring counter. Now we will see what do you mean by counter now. What do you mean by counter? Now when you talk about this counter, whenever you talk about this counter, we have different types of counter. The important counter is n-bit counter. When you say n-bit counter, when you say n-bit counter, I want everyone to pay attention now. हमने जॉनसन काउंटर पढ़ा, ये देखो मुझे, हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मॉड 2n बिट जॉनसन काउंटर, 2n बिट जॉनसन काउंटर. ओके, n is equals to number of flip flops, n is equals to number of flip flops. Okay, n bit Johnson counter, Johnson counter is important. लेकिन जब मैं लिखता हूँ n bit counter, it has some meaning in it. So what is the meaning in this? All of you pay attention. Now whenever you talk n bit counter, it means we have n number of flip flops. N is equals to number of flip flops. N is equals to number of flip flops. Okay, it can count from, so count will be 0 to 2 to the power of n minus 1, 2 to the power of n minus 1. इतने काउंट रहेंगे, 2 to the power of n minus 1. माइनस 1 देखो नीचे है, ऊपर नहीं है. माइनस 1 नीचे है. सो यू कैन, व्हाट इज दिस 2, 0 से लेके 0 to 2 to the power of n minus 1, ये क्या है? नंबर ऑफ काउंट्स, नंबर ऑफ काउंट्स. मॉड नंबर. यस, क्या बोले? मॉड नंबर भी ना. हाँ मैं बताता हूँ आपको. हाँ, सो हम टोटल कितने काउंट कर सकते हैं? 0 से लेके 2 to the power of n minus 1. अभी हमने जॉनसन काउंटर में हमने 4, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, हमने जॉनसन काउंटर में हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए. तो अगर मैं लिखता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स क्या, आपने मुझे बताया था कि सर टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 8 है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 8 है. ओके, सो वी हैव यूज्ड इन जॉनसन काउंटर, वी हैव यूज्ड 4 फ्लिप फ्लॉप्स. तो वहाँ पे टोटल स्टेट्स आपके है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. क्योंकि हम 0 से 7 ले रहे तो टोटल 8 स्टेट्स आ गए. लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे जब n बिट काउंटर की बात जब आती है तो वी गो फ्रॉम 0 to 2 to the power of n minus 1, 2 to the power of n minus 1, that is total number of counts. अभी वहाँ पे हमने n is equals to yes, 2 to the power of n minus 1 as a number of count. और वहाँ पे हमने फ्लिप फ्लॉप्स लिए थे 4 और वहाँ पे हमारा था 8 काउंट्स, बट दैट वाज जॉनसन काउंटर. उसको इसमें मत लाओ, दैट इज अ डिफरेंट. यस, दैट इज आल्सो काउंटर, that is also counter. How it is a counter? Can anyone of you tell me how it is a counter? This is a counter. 0, then this have some specific value, this have some specific value, this has some specific value. That means this is stage 1, this is stage 2, this is stage 3, this is stage 4. So every stage is unique. So total stages are 8. So total counts are 8. Total counts are 8. That is the meaning. Okay. तो हम जब यहाँ पे n bit counter की बात करते हैं, so we go from 0 to 2 to the power of n minus 1. Okay. Then the next one is instead of saying it, let me take the correction here. Don't say number of states. You can say total counts, or it counts from. It counts from 0 to 2 to the power of n minus 1. और अगर मैं बोलता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, टोटल स्टेट्स कितने हैं, सो टोटल स्टेट्स कितने हैं, then it comes to be 2 to the power of n, 2 to the power of n.
Now please see the difference. Okay, हम काउंट कर सकते हैं 0 से लेके 2 to the power of n minus 1. दूसरा होता है टोटल का, टोटल स्टेट्स कितने हैं, तो टोटल स्टेट्स है 2 to the power of n, 2 to the power of n. Okay, 2 to the power of n. Now 2 to the power of n, these are the total states. Then it is also called as mod m counter. Then it is called as mod m counter. Then it is called as mod m counter, or sometimes it is called as divide by m counter. Divide by capital M counter. Divide by capital M counter. Okay, again I am repeating, please listen here carefully. When you talk n bit of counter, n is nothing but number of flip-flops. This n bit counter will count from 0 to 2 to the power of n minus 1. If I ask you how many total states are there, you will say 2 to the power of n, 2 to the power of n. Then this counter is also called as mod m counter or divide by m counter. Where, this is very important now, where m is less than or equal to 2 to the power of n. This screen is very much important. ये स्क्रीन जो आपको दिख रहा है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, this is very very important. Students are getting confused in this. Students are getting confused in this. So I will explain you this with an example. With an example, I will take an example of simple example, 2-bit counter. 2-bit counter. Now we will go one by one. 2-bit counter. Now here n is replaced by 2. Here n is replaced by 2. Here n is replaced by 2. So it is a 2-bit counter. It is a 2-bit counter. अब जब 2-bit counter रहते हैं, तो मैं अगर पूछता हूँ कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स है, you will say n is equals to 2 is equals to number of flip flops. Number of flip flops. So there are 2 number of flip flops. 2 flip flop है. Next. कितने काउंट कर सकता हूं मैं? 2, I can count from 0 to 2 to the power of n. 2 to the power of n means 2 to the power of 2. 2 to the 4. 4 minus 1 is 3. So I can count from 0 to 3. I can count from 0 to 3. So 0 to 3. इसका मतलब क्या है? 0 to 3 का मतलब क्या है? 0, 1, 2 and 3. So यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? It counts from. So it बोले तो your flip flop, flip flop बोलो या फिर 2-bit counter बोलो. आपके 2-bit counter कहाँ से कहाँ तक काउंट कर सकता है? 0 से 3. इसका मतलब 0, 1, 2, 3. So it counts from 0 to 3. Okay. Then total number of stages. Total number of states कितने हैं? Total number of states है 2 to the power of n, nothing but 2 to the power of 2, that is 2 to the power of 4. So total states, 4 बोले कैसे? देखो 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. So total 4 states. Mod m क्या लिखूं? m क्या आएगा? See here, m should be less than or equal to 2 to the power of n. आपका n यहाँ पे है 2, so 2 to the power of 2 is 4. So m should be less than or equal to 4. Should be less than or equal to 4. So I will say this as m is equals to 4. So this is mod 4. This is mod 4 counter. This is mod 4 counter. Or it is, or we can say, जैसे हमने यहाँ पे बताया था, divide by m counter. तो आप इसको अलग नाम दे सकते हो, divide by 4 counter. So divide
by 4 count. Divide by 4 count. Divide by 4 count. Any question in this? We are going to solve some problem on this, or we are going to see the design of this. Any question? Any question? No, sir. Okay. So this is the 2-bit counter. Now with this 2-bit counter, let me also show you, explain you that this counter can be of two types. That is asynchronous and synchronous. Okay, asynchronous and synchronous. Now here the definition of asynchronous and synchronous is somewhat different now. Okay, is somewhat different. Okay, अब वो definition क्या है? See here all of you. I am reading out the definition. I want everyone to pay attention. The definition of asynchronous. मैं यहाँ पे लिखता हूँ. The definition of asynchronous counter. Asynchronous counter. Definition of asynchronous counter. Okay. So we will see the definition. Everyone just give me 1 minute, okay? Just give me 1 minute. मेरी सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, just give me 1 minute, okay? Yes, everyone pay attention now. So asynchronous counter. मेरी आवाज आ रही सबको? Yes, sir. Now see that I am reading out the definition. All of you pay attention. आप कान खोल के सुनो. The counter in which external clock is applied to only the first flip-flop and the successive flip-flops are clocked by the output of the previous flip-flop is called as asynchronous counter. Then what do you mean by synchronous counter? What do you mean by synchronous counter? Synchronous counter का definition है the counter in which the clock inputs of all flip-flops are in synchronization with each other and can be triggered by the same external clock signal is called as a synchronous counter. Is called as a synchronous counter. Okay. Now with this definition, let me explain you the basic important counter which is called as 2-bit ripple up counter. Okay, so I will explain you this. In that you will be able to understand what is asynchronous and what is synchronous. Okay, so what is that? Please see here. We are going to study the important counter, and that counter is 2-bit ripple counter. So 2-bit ripple counter. So 2-bit, I am taking the simple example. With this you will be able to understand the other example also.
this thing I will take as the last one, so I can stop for today. Okay, but this is important. This is very important. Once you understand this, on this you will be able to understand the other one. 2-bit ripple counter we are going to see. मेरा open board शायद problem दे रहा है. Okay. मेरा board सबको visible है, open board? Yes, sir. So 2-bit ripple. I want everyone to underline this. अब जो लोग लिख रहे हैं well and good, जो नहीं लिख रहे सिर्फ देख रहे हैं, just try to understand. Then afterwards you can pare it down by going through the video recording. So it is a 2-bit ripple up counter. This is also called as serial count. Okay. Now I have told you 2 types of counter, asynchronous and synchronous. मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ. सपोज मेरे पास 3 फ्लिप फ्लॉप है. ओके, मेरे पास 3 फ्लिप फ्लॉप है. और असिंक्रोनस के डेफिनेशन के हिसाब से क्या है? द काउंटर इन विच एक्सटर्नल क्लॉक इज अप्लाइड टू ओनली द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. यानी सपोज यहाँ पे पहले फ्लिप फ्लॉप को ही मैंने क्लॉक दिया है, इसको क्लॉक और इसको क्लॉक देना है. इसको क्लॉक कहाँ से जाएगा? इसका आउटपुट इसको क्लॉक देगा, इसका आउटपुट इसको क्लॉक देगा, और यहाँ पे आपका एक आउटपुट है. तो दिस सिनेरियो इज कॉल्ड एज असिंक्रोनस काउंटर. और सिंक्रोनस काउंटर क्या है वो तो आपको पता है. तो ये इसी में आपको या फिर मैं अलग से बनाता हूँ. यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे है, ये एक क्लॉक, ये एक क्लॉक और ये एक क्लॉक. ये तीनों को मिलाओ और एक एक्सटर्नल क्लॉक दो. ये हो गया सिंक्रोनस काउंटर. ओके. सो असिंक्रोनस काउंटर में ये होता है इंपॉर्टेंट कि पहले ही फ्लिप फ्लॉप पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसको हम क्लॉक देते हैं एक्सटर्नली, लेकिन बाकी के जो फ्लिप फ्लॉप्स है इसको क्लॉक कौन देता है? पहले का आउटपुट, प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट. इसका प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप है ये, इसका आउटपुट. ये फ्लिप फ्लॉप का प्रीवियस कौन सा है? ये, इसका आउटपुट. सो दिस डिजाइन इज कॉल्ड एज अ asynchronous counter, and this is known to you. This is called as a synchronous counter. अभी काउंटर में और 3 अलग टाइप के होते हैं. वो होता है अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप डाउन काउंटर. ओके. वो अप काउंटर डाउन काउंटर कैसा होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे क्या लिख के दिया है? 2-bit रिपल अप काउंटर. ये मुझे डिजाइन करना है, 2-bit रिपल अप काउंटर. अभी रिपल भी क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा. बट अप काउंटर का क्या मतलब है? अप काउंटर का मतलब होता है कि वी कैन काउंट फ्रॉम इन द अप डायरेक्शन. अप डायरेक्शन बोले तो 0 1 2 3 ... till m. Okay, capital M. This is important. Till m. So I can count till m. This is called as up counter. Till m. And down counter क्या होता है? From up towards the down. Okay, so that means I can say I can count from m, m-1, m-2, ... then 3 2 1 and 0. This is called as a down counter. Okay, up counter 0 1 2 3 ... m. Down counter m, m-1, m-2, ... 3 2 1 0. और अप डाउन काउंटर क्या होता है? उसी काउंटर में I can have both the directions, going upward direction as well as I can go downward direction. So उसमें दोनों प्रोविजन होते हैं, अप एंड डाउन काउंटर. Okay, so up counter you have understood, down counter you have understood asynchronous counter, you have understood synchronous counter. Now with this understanding we are going to understand what is a 2-bit ripple counter. This is an example I have taken. 2-bit, you can have 3-bit, you can have 4-bit. Okay, so that thing you can do as a homework. और एक बात है, रिपल का मतलब क्या है वो मुझे आपको बताना है. ओके, सो विद इन द नेक्स्ट 5 to 10 minutes I will be completing this, then we can stop. Okay, so we will see the 2-bit ripple counter. Now it is a 2-bit ripple counter. Can any one of you tell me 2-bit ripple counter है तो how many flip flops are required?
2. 2. So n is equals to 2. If n is equals to 2, tell me how many states I can achieve. How many states? How many states? How many states? 4. 4. 2 to the power of n is equals to 2 to the power of 2 is equals to 4 states. 4 states. Then tell me this particular n-bit ripple counter will count from where 0 to what value? 0 3. to 3. yes 0 to 2 to the power of n minus 1. It is nothing but 0 से लेके 2 to the power of 4 minus 1, sorry, 2 to the power of 2 minus 1, that is 0, 1, 2 to the power of 2 means 4 minus 1, 3. So 0, 1, 2, 3. So these are the states. 0, 1, 2, 3 मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसा? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, yes. Now with this understanding, see the design. See the design of 2-bit up counter. See the design. यहाँ पे design ये है कि you have 2 flip-flops, but this flip-flop is JK, J1, K1. This is J2, K2. यहाँ पे D flip-flop नहीं यूज कर रहे, 2-bit रिपल काउंटर के लिए हम यूज कर रहे हैं JK flip-flop. तो JK, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये J और K combined together and it is given as 1. Can any one of you tell me when J and K are combined together and it is given to 1, then what is, क्या होता है? यहाँ पे भी J और K combined together and given to the 1. Yes, Toggle. yes, it works as a toggle. You are right. So here I have Q1, here I have Q2. Q1 हम यहाँ से निकालेंगे और Q2 हम यहाँ से निकालेंगे. So these are the two outputs, Q1 and Q2. What about Q1 bar? अब Q1 bar will be given as the clock. मैंने बोला था आउटपुट Q1 भी है और Q1 bar भी है. यहाँ पे Q1 bar used as a clock pulse to the flip-flop 2. So this is my flip-flop 1, this is my flip-flop 1, and this is my flip-flop 2. तो flip-flop 2 का previous flip-flop 1 है, उसका आउटपुट Q1 बार से लिया है और क्लॉक बोल के दिया है. तो here this is the clock. This is the clock. What about your Q2 bar? Q2 bar is not used, so हम वैसे के वैसे रख सकते हैं. और इसको क्लॉक कहाँ से दे रहे हैं? हम इसको क्लॉक एक्सटर्नल से दे रहे हैं. This is the design of your 2-bit up ripple counter. 2-bit up ripple counter. Okay, 2-bit up ripple counter. Now you have to pay attention. I will explain you properly with the timing diagram. पहले मुझे बताओ ये डिजाइन समझ में आई सबको? Yes, sir. हाँ, अभी मैं आपको ये डायरेक्टली टाइमिंग डायग्राम से बताऊंगा. टाइमिंग डायग्राम पे ध्यान दो. पहला मेरा टाइमिंग डायग्राम रहता है क्लॉक के ऊपर ही सब चलता है. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. अभी क्लॉक के पॉजिटिव एज आपको पता है, तो पॉजिटिव एज पे ही चेंजेस दिखेंगे आपको. पॉजिटिव एज पे ही चेंजेस दिखेंगे. सो पॉजिटिव एज. ओके, ये भी बनाना जरूरी है. डॉट 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 डॉट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके हिसाब वो क्लॉक में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो दिखना चाहिए. कौन सा भी चेंजेस किधर भी नहीं दिख सकता. रेस्पेक्टिव क्लॉक पे ही क्या चेंजेस है वो दिखना जरूरी है. ओके, वो दिखना जरूरी है. सो जस्ट अ मिनट. So dot. Okay, we can see the dot till here only. ठीक है. So this is clock 1, this is 2,
this is 3, this is 4, this is 5. ओके, अभी मेरा Q1 यहाँ पे है, मेरा Q1 बार यहाँ पे है, मेरा Q2 यहाँ पे है. ओके, सो Q1 बार एंड Q2 बार मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो वो मैं नहीं बना रहा हूँ. ठीक है, अब मुझे बताओ, पहला क्लॉक आ गया, पहला क्लॉक हमने फ्लिप फ्लॉप 1 को दे दिया. प्लीज पे अटेंशन यार. ये मैंने क्लॉक आया, पहला क्लॉक, ये मेरा पॉजिटिव एज क्लॉक है, तो पॉजिटिव एज क्लॉक यहाँ पे आ गया. ओके, तो पहला जब क्लॉक आया तो मुझे बताओ, जेके को मैंने कंबाइन करके हाई दिया है ना, टॉगल का काम करेगा, ये ना टॉगल का काम करेगा. ओके, तो मुझे बताओ पहले Q1, इनिशियली मैं क्या करता हूँ, Q1 मैं 0 लेता हूँ, Q1 में 0 लेता हूँ. ये देखो Q1 0 लिया, यहाँ तक 0 लिया. अभी क्लॉक आ गया, अभी मुझे बताओ Q1 0 है, तो क्लॉक आने के बाद Q1 क्या होगा, Q1 क्या होगा, Q1 क्या होगा. Okay, I will do one thing. Initially you assume Q1 and Q2 as 0 0. अब बताओ, initially you assume Q1 and Q2 as 0 0. इसलिए तो मैंने यहाँ पे ये बनाया ना, इनिशियली Q1 को 0 रखा ना यहाँ पे. अब बताओ, J और K1 को मैंने 1 दिया, टॉगल जैसे काम करेगा. अब मैंने क्लॉक दिया, अभी क्लॉक में देने के बाद Q1 का क्या हालत है, वो टॉगल जैसे काम करेगा ना, तो क्या होगा, 1, क्योंकि 0 है ना, 0 है तो अभी वो 0 का टॉगल करेगा, टॉगल का 1 बोले तो वो 1 जाएगा. ये देखो, क्लॉक पे वो 1 गया, क्लॉक पे वो 1 गया. ये 1 रहेगा जब तक नेक्स्ट क्लॉक नहीं आता. ठीक है, ये 1 रहेगा जब तक नेक्स्ट क्लॉक नहीं आता. अब मुझे बताओ, Q1 आपका 0 का 1 हो गया, वैसे Q1 बार क्या होगा, यहाँ पे 0 है तो Q1 बार 1 है, यहाँ पे 1 है तो Q1 बार 0 होगा. ये देखो 0 होगा, और ये भी वहां तक जाएगा, खत्म. अब मुझे बताओ Q2 क्या है. इनिशियली Q2 मेरा 0 है, तो मैंने Q2 को 0 यहाँ तक बना दिया. अभी क्लॉक आ गया, ये फिर से प्रीवियस को जाओ. ये मैंने हाँ, क्लॉक आने के बाद ये आपका 1 है, तो ये आपका Q1 बार ये 0 है. अब 0 क्लॉक दिया, 0 क्लॉक गया, यानी क्लॉक दिया ही नहीं, तो Q2 क्या आएगा, क्लॉक 0 है, सोच समझ के आंसर दो. क्लॉक 0 इसका मतलब क्लॉक दिया ही नहीं, तो Q2 क्या रहेगा, इनिशियली Q1 Q2 मैंने 0 0 अज्यूम किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे Q2 भी इनिशियली 0 ही रखा है. अब क्लॉक आने के बाद बताओ क्या स्टेटस है. मेरी आवाज आ रही है सबके पास, 0. हाँ, इट इज 0. ये देखो Q2 आपका इनिशियली 0 था, क्लॉक आपको हाई चाहिए था लेकिन 0 ही है, तो 0 इसका मतलब जो प्रीवियस स्टेज है उसी को तो स्टोर करके रखेगा वो, तो वो 0 के 0 वैसे कंटिन्यू करेगा. तो आपका ये है, वो 0 वैसे के वैसे ही रहेगा, ओके, ये हो गया. अभी आपका सेकंड क्लॉक आया, ये पहला क्लॉक आया, अभी ये देखो सेकंड क्लॉक आया. अब सेकंड क्लॉक आया तो मुझे Q1 बताओ क्या है, फटाफट अभी आपको आना चाहिए, टाइमिंग डायग्राम को फटाफट कंप्लीट करो. Q1 आया, सेकंड क्लॉक पल्स आने के पहले आपका Q1 है 1, I am waiting for your answer. Is it so difficult that you are taking more than 2 or 3 seconds? Is it so difficult you are taking more than 2 or 3 seconds? 0 होगा ना, टॉगल होगा. टॉगल हो रहा ना, फिर फटाफट बताओ ना, टॉगल हो रहा है ना, वो ये हो गया 0, ये देखो 0 हो गया, ये 0 रहेगा जब तक नेक्स्ट क्लॉक नहीं आता. मुझे अभी Q1 बताओ, Q1 बार बताओ, ये 0 जा रहा है, ये Q1 बार है, तो 0 से 1 जाएगा, ये 0 से 1 गया, ये भी वहां तक रहेगा. मुझे अभी Q2 बताओ, Q2 आपका 0 था. अब मैं फिर से आपको बताता हूँ यहाँ पे, हाँ, आपका ये क्लॉक Q1 आपका भी क्या आया,
Q1 आपका आया 1, Q1 आपका ये 1 आया, सॉरी ये आपका क्या है, हाँ Q1 बार आपका 1 है, ये देखो यहाँ पे Q1 बार आपका 1 है, ये 1 है, यानी क्लॉक अभी आ गया, ये क्लॉक आ गया। तो पहले जो 0 था अभी क्या होगा, ये टॉगल करेंगे 1 आएगा, यस इट विल बी 1। सो ये जो आपका Q2 था ये सेकेंड क्लॉक में अभी वो 1 जाएगा, ये देखो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अभी मुझे बताओ थर्ड वाले क्लॉक में क्या होगा। थर्ड वाले क्लॉक में आपका Q1 0 है, 0 है, क्लॉक आ गया, Q1 है 0, बताओ Q1 है 0, फिर से वही बात, अरे ये टॉगल जैसे काम कर रहा है ना, ये टॉगल जैसे काम कर रहा है ना। यस हाँ तो बताओ ना फिर जल्दी, टॉगल तो 0 का 1, ये 1 यहाँ तक रहेगा, ये 1 हो गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 ये यहाँ तक रहेगा। अभी ये आपका Q2 था 1, Q2 था 1, ये Q2 था 1, फिर आपका क्लॉक आने के बाद ये फिर से टॉगल करेगा ना, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का क्या होगा 0। थर्ड वाले में ना, सॉरी समथिंग इज रॉन्ग, नो ये देखो क्या है, ये आपका Q1 है ना, ये देखो Q1 आपका 0 है, Q1 बार आपका 0 है, और Q1 बार आपका इनपुट, ये Q1 बार आपका इनपुट बोल के जा रहा है ना क्लॉक को। यस हाँ तो ये 0 है ना, तो 0 बोले तो क्लॉक नहीं दिया आपने, जो पहले जो कंडीशन है वही स्टोर करेगा ना। पहला कंडीशन क्या था, 1 था, तो 1 ही तो स्टोर करके रखेगा ना, हाँ या ना। यस सर हाँ तो 1 स्टोर करके रखेगा वही। तो ये देखो 1 वैसे के वैसे कंटिन्यू करेगा, ये देखो 1 यहाँ से कंटिन्यू किए, तो ये 1 ओके। अभी एक लास्ट वाला फोर्थ में बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ फोर्थ पे क्या होगा। फोर्थ क्लॉक पल्स पे ये 1 का क्या हो जाएगा 0, ये देखो 0, Q1 बार 0 का कॉम्प्लीमेंट है नहीं है, तो 0 का 1 ये ऊपर जाके ये वो ऐसा हो। अभी Q1 बार आपका 1 है, यानी अभी वो क्लॉक पॉजिटिव है सेकंड फ्लिप फ्लॉप को, तो वो टॉगल करेगा, तो 1 का, हाँ वेरी गुड, बस मैं यहाँ तक जाऊंगा। अभी सबने ध्यान देना है, सबने अभी मुझे ध्यान देना है, ओके। सी हियर नाउ, in the initial, before I give the clock, Q1 is 0, Q1 bar is 1, and Q2 is 0. So I will only talk about Q2 and Q2. I will only talk about Q2 and Q1 here. I will only talk about Q2 and Q1. तो मुझे बताओ ये इंस्टेंट में Q2 Q1 क्या है, फटाफट बताओ। ये इंस्टेंट में Q2 Q1 क्या है। लास्ट आई विल टेक 3 मिनट्स, 3 to 4 मिनट, जल्दी आंसर दोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। 0 Q2 Q1 दोनों बताओ। Q2 Q1, ये देखो Q2 और Q1 0 0 0, यू शुड से 0 0, Q2 Q1 0 0, ओके। अभी ये क्लॉक इंस्टेंट में बताओ क्या है Q2 Q1। 1 0 Q2 Q 0 1 0 0 1 1, हाँ ये देखो 1 है, ये देखो 0 है, Q2 Q1 0 1, ओके। सेकेंड क्लॉक पे बताओ स्टेटस क्या है Q2 Q1 का। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, 1 0 1 0। थर्ड क्लॉक पल्स पे स्टेटस बताओ, ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है, 1 1। थर्ड फोर्थ क्लॉक पल्स पे स्टेटस बताओ, ये आपका 0 है, ये आपका 0। कैन यू सी हियर द स्टेट्स 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1।
and this will continue, and this will continue, and this will continue. So why it is called as a ripple? Now here you will understand why it is called as a ripple. Here it called as a ripple because the 0 1 1 0 1 1, these are forwarded from one initial stage to the next stage. So ripples are there. Can anyone of you tell me what is the dictionary meaning of ripple? What is the dictionary meaning of ripple? Can anyone of you tell me what is the dictionary meaning? Ripple, ripple. Ripple means it's like a waves. Ripple waves. Okay. आपका ये 0 0 0 1 1 0 1 1 ये फिर से वही कंटिन्यू हो रहा है. It's like a ripple. It will continue. It will continue. Okay. So मेरी आवाज आ रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. So this is the one important 2-bit ripple up counter. Up counter इसलिए कि हम 0 0 0 1 1 0 1 1 पे जा रहे हैं. Okay. In the same way, we will be able to understand the down counter and up down counter. Okay. So that thing you can do as a homework. Next time I will take the remaining part. Okay. So those who are not understood, please go through the recording and do it properly. Any question? Any question in this? Okay. Mantri, you take the attendance fast. Mantri is there? Yes, sir. Yeah, take the attendance. Roll number 1, 3, 4, Present. 5. Roll number 6, 7, Present. 9, Present. 10, 11, Present. 12, 13, 12 present. 13, 14, Present. 15, 16, Present. 17, 18, 19, 20, 21,